in the last part of this interview with Anubha Batra Maam, who is the first cousin of Paramveer Chakra Captain Vikram Batra. We will be talking about how Bollywood can play a role in bridging the gap between the civilians and the armed forces, about our flawed education system, and about how our soldiers are our modern day freedom fighters. Let's get straight into it. ये देखा जाता है इंडिया में कि जब कोई इवेंट होता है जैसे बालाकोट स्ट्राइक या उरी अटैक या पुलवामा अटैक, तो सब बहुत बज क्रिएट हो जाता है एंड एवरीवन इज लाइक आवर आर्मी, आवर सोल्जर्स, दिस एंड दैट, एंड इट डाइज डाउन इन नो टाइम. कोई फॉर एग्जाम्पल जब हंदवारा एनकाउंटर हुआ था, one day after that, Rishi Kapoor and Irfan Khan had passed away consecutively. And I remember every single person had put up a post, a story about, their contribution to cinema and blah, blah, blah. And no one had acknowledged the martyrdom of Colonel Ashutosh Sharma, Major Anuj Sood. तो जब ऐसा होता है, is there a message that you'd like to give to the people of this country? I feel कि अगर ये हो रहा है again, it's like मेरे घर में तो लड़ाई नहीं हो रही ना. मेरे घर में तो लड़ाई नहीं हो रही ना, तो वो वाली अप्रोच है. And see, the biggest reason I feel जो रीजन है इस प्रॉब्लम का, वो यही है कि हम अभी तक अपने आर्म फोर्सेस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, एंड दैट इज वेयर द बॉलीवुड हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले. मैंने अपने घर में बैठ के इरफान को देखा है, ऋषि कपूर को देखा है, पर मैंने तो वो ऑफिसर है जो अभी 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 वहां पे खड़ा हुआ है और उस अपनी हिम्मत से वो वॉर लड़ रहा है और हमारे को प्रोटेक्ट कर रहा है. मुझे पता ही नहीं है वो है कौन. Yeah. But can the education system also be blamed a little bit? Because, for example, हम पूरा इंडिया का हिस्ट्री में हम फ्रीडम की पूरी फाइट पढ़ते हैं, के बारे में पढ़ते हैं, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में. Even our soldiers are freedom fighters, right? In a way, like अगर वो नहीं है, we have no freedom. They are the protectors of our freedom. So do you feel it's high time कि हमारे education का भी part हो stories like PVC Vikram Batra and many others that have, protected our country, made the supreme sacrifice, or even like the क्या hierarchy है Indian Army की, सब कुछ कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी, SSB क्रैक कैसे करते हैं, मतलब बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए हर बच्चे को. स्टार्ट तो वहीं से होता है ना, एजुकेशन सिस्टम से. आप अगर अपने यूथ को पढ़ाओगे ये चीजें, तभी तो आप ये बात फैला पाओगे ज्यादा से ज्यादा. यू कैन ब्रिज दैट गैप, right? So Yeah, do you think this should happen? Yeah, absolutely. So I think education, and to talk about education, I'm from the education sector. Though I do corporate trainings, I firmly believe that it is very important to have this as a part of the curriculum, and because, like you very beautifully mentioned, that they are also freedom fighters. Yes. Shahid Bhagat Singh, freedom fighter, but there are other soldiers who were also freedom fighters. Yes. And freedom is something that we have to keep fighting for every day. Yes. So that is not going away. We have to keep fighting. The only difference is कि मैं आज अपने घर में आराम से बैठ के फ्रीडम एंजॉय कर सकती हूँ, और इसको हमको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. Yes. और हमारे को एक्नॉलेज करना कि हमारे इस कंट्री में ऐसे बहुत सोल्जर्स हैं जो कि on a daily basis sacrifices कर रहे हैं, छोटे बड़े. I mean, एक छोटा सा sacrifice, जैसे कि उनके पास सिर्फ लिमिटेड खाना होता है खाने को. Yes. उनके पास वो कंफर्टेबल बेड नहीं होता है सोने को जो हमारे पास होता है. Yes. एक छोटा सा सैक्रिफाइस छोटा नहीं है ये, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है. Yes. क्योंकि अगर आप एक दिन टेढ़ा सो गए तो आपको पता है आपकी बैक में कितनी प्रॉब्लम होने वाली है. Yes. एंड इमेजिन कोई ऊपर हिल टॉप्स पे बैठ के कैसे सो रहा है यार, कैसे. और आपको पता है कि कभी भी कहीं से भी अटैक हो सकता है.
Yes. So you are always afraid, always scared, and always alert. Hmm. These things need to be taught Yes. to the children, and they need to understand, because you're right. आज की generation Hmm. इतनी comfortable और cozy है, और हमारी social media में हम इतना चीजें देखते हैं, Hmm. हम इतनी डांस वीडियोस देख रहे हैं, Hmm. हम स्किट्स देख रहे हैं, परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, which is great. Hmm. But simultaneously, our next generation has become even farther away Yes. from a thing called you have to fight for your freedom. Yes. Absolutely. And this will come at a very heavy price, because anytime anything can go wrong, any war can happen, कोई भी मिसहैप हो सकता है, Hmm. और हमारी फ्यूचर जनरेशन अगर रेडी नहीं है, अगर प्रिपेयर्ड नहीं है, हाँ. तो कैसे होगा यार? You know, Exactly. it's a very grave question that we have to ask ourselves as parents, Yeah. and you know, and our educational system. We have Yes. to incorporate this. Yes. तो मैम, जो एहसान कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस देश पर किया उस दिन, सुप्रीम सैक्रिफाइस चूज करके ओवर हिज ओन लाइफ ब्रेथ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस कंट्री, आपको क्या लगता है किस वे में इस देश के लोग वो किसी तरह थोड़ा भी रीपे कर सकते हैं? As civilians, मैं भी एक सिविलियन हूँ. As civilians, I think it's हमको ये समझना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है, और हम आर्मी में नहीं है, पर हमारी कंट्री को हमारी बहुत जरूरत है, यस. बहुत जरूरत है. एंड हम सबको किसी ना किसी फॉर्म में छोटा छोटा कोई कंट्रीब्यूशन करते रहना चाहिए. एवरी डे जस्ट मेक इट अ हैबिट यस. ऑफ मेकिंग स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस. आपको कोई सामने कोई लेडी नजर आ रही है, जिस जो ओल्ड लेडी आ रही है, जो चल नहीं पा रही है, एंड शी इज कैरिंग बैग्स, पिक अप दोस बैग्स एंड हेल्प हर. आप यूथ हैं, आप में जान है, आप में एनर्जी है, दैट इज व्हाट यू कैन ऑफर. यस. आप अपनी youth, आप अपनी एनर्जी उस ओल्ड लेडी को ऑफर कर सकते हैं. करिए, यस. डू दैट. आपको कोई जानवर भूखा रोड पे नजर आ रहा है, आप उसको थोड़ा सा एक बिस्किट खिला दीजिए. आपको प्लांट्स में मरते हुए नजर आ रहे हैं, आप पानी डाल दो. वेट मत करो कि सोसाइटी से कोई पानी डालेगा. Right? आपको बर्ड्स आपके आसपास आती हैं, आप एक छोटा सा पानी का बोल छोड़ दीजिए. आपको एक छोटा बच्चा रोड पे चीजें बेचते हुए नजर आ रहा है, तो सिर्फ उसकी चीज खरीद लीजिए. चाहे आपको यूज में हो ना हो, प्लीज खरीद लीजिए. Yes. इट इज सच एन encouragement. Yeah. एंड एंड Just यू नो empathy. Bring out the empathy in you for everyone and everything around you. एक army officer ने, ma'am, he put it so beautifully. What you're trying to say is, I think you're trying to say the same thing that he told me. Colonel Amardeep Singh sir, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था, he said कि अगर इंडिया का हर इंसान अपनी जॉब बेस्ट तरीके से कर दे, ये नहीं कह रहे कि हर इंसान आर्मी ज्वाइन कर ले, बॉर्डर पर जाकर इंडिया को प्रोटेक्ट कर ले, वो कोई कर भी नहीं सकता है हर इंसान, बट जिस इंसान का जो काम है वो उसे 100% ईमानदारी से अच्छी तरह कर ले, तो भी 90% ऑफ आवर बैटल्स विल बी वन, यू नो. आई एग्री. And आप of अपना course, काम. with empathy comes the extra little bit that you can do for everyone around you. Animals, be it animals, birds, children, older people, everyone, and the armed forces as well. And the armed forces, that goes Yeah. without saying. We have Yeah. to be grateful to them for everything that they are doing. Yes. This at this point in time, मुझे ये लगता है कि कोई भी छोटा सा भी स्टेप जो हम अनसेल्फिशली करें ना, अपने लिए नहीं किसी और के लिए ना, it is not just going to make our country better, but internally also it will give us a lot of happiness. Yes. एंड एक सिक्योरिटी और एक हैप्पीनेस हमारे अंदर अपने लिए एक प्राइड Yeah. महसूस होनी चाहिए. और Yeah. वो आग है, वो आग जो है ना, वो आग बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड दैट इज द प्राइड, दैट इज द फायर दैट एवरी आर्म्ड फोर्स ऑफिसर हैज.
So we can Absolutely. also, we can also enjoy that. बहुत Correct. छोटे point में. Correct, absolutely. That's beautifully said, ma'am. So जो Soldiers of India का मैंने ये क्यों शुरू किया था, उसका main जो motive था was to be able to connect armed forces, their families, families of martyrs, to the civilians, and you have contributed heavily to that today. You've made such a beautiful addition to the Soldiers of India family today. I cannot thank you enough for being here with us today, ma'am. Thank you so much. The fact that you are doing something like this is your form of contribution for this country, and I am very thankful for you, thankful to you for sharing these stories with the rest of the country. तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपकी भी. और जो भी ये वीडियो देखेंगे, जो भी जो भी ये देख रहा है, I just have only one small request that there is a lot of love in this country. Let's just enjoy that love, and let's just contribute to that love. Yes, absolutely. Thank you so much, ma'am. And let's end this with a Jai Hind. Jai Hind.